Hello students and welcome to Vidya Mandir classes. I'm Sanjana Jain and I'm your botany faculty. So in the last class we have completed with the chapter transport in plants. Today we are going to start with a new chapter that is mineral nutrition. In this chapter we are going to deal with why and what nutrients and what minerals are required or are necessary for the plant. इस चैप्टर के अंदर से इस बार नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं, थोड़ा मिक्सअप से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. प्लांट फिजियोलॉजी से ओवरऑल 10 क्वेश्चंस आए हैं. सो दिस होल यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट नीट 2020. प्रीवियस ईयर्स में भी यही ट्रेंड रहा है कि प्लांट किंगडम या प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी सेम ट्रेंड मेंटेन हुआ है. So don't miss this unit. It is a very important unit of botany. Let's start with a new chapter today, that is mineral nutrition. Let's start. Okay, so now let's put on the name of the chapter. You can put down the name of the chapter. That is mineral nutrition. So the first question that should come to your mind is mineral nutrition mein what are nutrients? Nutrients hote kya hai, and then what is the meaning of the the name of the chapter. So let's start with it. You can write down first point, the chemical substance that is present in the food and that helps in bodybuilding. Bodybuilding मतलब ये नहीं, मतलब proper body को build करने में जो responsible है, that is called as nutrient. So you can write down the chemical substance present in food which act as a raw material for bodybuilding and maintaining its function, और body के functions को maintain करने के लिए, and maintaining its functions is called as nutrients. Nutrients organic भी हो सकते हैं, inorganic भी हो सकते हैं. Organic में just like carbohydrates, fats, proteins. Inorganic में mineral ions. Write it down. Fats, proteins. Inorganic में mineral ions. प्लांट्स के कौन कौन से मिनरल रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए एक टेक्निक डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स. तो बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक्स you can rectify which mineral ions are important for the plant. So you can write down methods to study the mineral requirements of the plant. Write it down.
इस मेथड में जो मेन मेथड आता है वो मेथड आता है उसको हम बोलते हैं सॉइललेस कल्चर, सॉल्यूशन कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक. You can write down to determine the essential nutrients. The essential nutrients method is hydroponics, or you can say it soilless culture, or you can also call it as solution culture. Basically इस मीडियम इस मेथड में होता क्या है, देखो नॉर्मली योर प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल एंड दे टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. अब आपको पता नहीं चल रहा प्लांट कौन से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, कौन से नहीं ले रहा, और कितने अमाउंट में ले रहा है, कितने अमाउंट में नहीं ले रहा. अगर आप लैब में ऐसा कोई मीडियम बनाओ, कल्चर मीडियम, सॉल्यूशन मीडियम, जिसमें आप अपने नोइंगली एक उतने ही न्यूट्रिएंट्स डालो जितनी क्वांटिटी प्लांट को रिक्वायर्ड है, तो बाय ऑल्टरिंग द वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए नेसेसरी है, और अगर मैं ये न्यूट्रिएंट प्लांट को ना दूं तो प्लांट को क्या डेफिशिएंसी सिम्टम दिखेगा, और ये न्यूट्रिएंट प्लांट को कितनी क्वांटिटी में नेसेसरी है. अगर ये न्यूट्रिएंट हमने प्लांट को ज्यादा दे दिया तो प्लांट को क्या सिम्टम शो करेगा. तो ये सारी की सारी चीजें आप समझ सकते हो बाय दिस मेथड. तो इस मेथड से बेसिकली यू कैन फाइंड आउट कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है या बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है. जूलियस वॉन सैक वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इस मेथड को डिस्कवर किया. सो यू कैन राइट इट डाउन. Plants are grown in soil-free, defined mineral solution. अब ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. So you can write it down. It contains all essential elements in proper proportion required for the growth and development of the plant. Required for the growth and development of the plant. तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिनरल आयंस हम इस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं जिसमें सॉइल नहीं है. नेक्स्ट, सबसे पहले ये टेक्निक डेवलप हुई थी जूलियस वॉन सैक एंड यू कैन राइट इट डाउन. द टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड. The technique was first developed. The technique was first developed by Julius von Sack. इसी को मैंने आपको बताया, इसको सॉइललेस कल्चर भी बोल सकते हो आप, हाइड्रोपोनिक्स भी बोल सकते हो या सॉल्यूशन कल्चर भी बोल सकते हो. इसके अंदर एक प्रॉपर सेटअप होता है. आई टेल यू व्हाट इज द सेटअप. यू कैन ड्रॉ द डायग्राम अलोंग विद मी. इस सेटअप में आसपास इट इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर. You are covering this setup with a black paper.
है. So this is, you are covering with a black paper. Here you have placed a funnel. अगर आपको कोई और न्यूट्रिएंट्स या वाटर ऐड करना है, so you have placed a funnel for adding water and nutrients. You have also placed a bent tube. A bent tube. ये बेंट ट्यूब हमने क्यों रखे कि एरेशन के लिए, अगर प्लांट को एयर प्रोवाइड करने के लिए. यू कैन राइट डाउन बेंट ट्यूब फॉर एरेशन, एयर प्रोवाइड करने के लिए. इन सभी चीजों को आपने ब्लॉक कर दिया जिससे कि कोई एयर टाइट कंटेनर बनाए, जिससे कि कोई अनवांटेड सब्सटेंस अंदर पास ना कर सके. And here you have placed your plant. You have placed your plant. ठीक है, तो इसके अंदर कंटेनर के अंदर आपके पास सोल्यूशन है. अब आपने ब्लैक पेपर से क्यों कवर किया? ब्लैक पेपर से इसलिए कवर किया है कि कोई भी सनलाइट के साथ अनवांटेड रिएक्शन ना हो जाए अंदर, कोई भी अनवांटेड रिएक्शन ना हो जाए. इसका मतलब कि एल्गल ग्रोथ ना हो जाए. कई बार क्या होता है, आपने जब सोल्यूशन डाला तो उसमें छोटी मोटी एल्गी अगर चली जाए, तो अगर उसको सनलाइट मिलती रही तो वो एल्गी ग्रो करेगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी मीडियम में है. तो इसलिए अनवांटेड कोई भी या ना तो एल्गल ग्रोथ वगैरह ना हो जाए. सो यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन राइट दिस डाउन. ब्लैक पेपर से जो कवर किया आपने, टू मिनिमाइज algal contamination और रूट्स का कोई भी रिएक्शन विद दी एंड रिएक्शन ऑफ रूट्स टू सनलाइट. नॉर्मली जब प्लांट सॉइल में होता है, सॉइल में ग्रो करता है, तो उसके रूट्स को सनलाइट नहीं मिलती, कि रूट्स सनलाइट रूट्स के अंदर आपका सॉइल में पेनिट्रेट नहीं करती. तो उसी तरह का इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो कि रूट्स को अभी भी सनलाइट ना मिले, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन सनलाइट से रूट का ना हो और ऊपर से एल्गल कंटामिनेशन भी ना हो पाए. ठीक है, नाउ ये जो आपने कंटेनर लिया, या आप ग्लास जार भी ले सकते हो या पॉलिथीन का एक बैग भी ले सकते हो और उसको भी कवर कर सकते हो. ऑब्वियसली इस सेटअप के अंदर आप बहुत ही ज्यादा टॉल ट्रीज को ग्रो नहीं कर सकते. अगर आप सोचो बैनन ट्री को ग्रो करना, तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो थोड़े स्मॉल ट्रीज इसमें ग्रो होते हैं. बट इसका फायदा क्या है, जितने भी प्लांट्स आप ग्रो करोगे उसमें आप ये जान सकते हो कि विच प्लांट्स रिक्वायर विच न्यूट्रिएंट्स, इन हाउ मच क्वांटिटी इट इज रिक्वायर्ड. अगर वो न्यूट्रिएंट आपने प्लांट को नहीं दिया तो प्लांट क्या डेफिशिएंसी सिम्टम दिखा सकता है. So you can know all these things. So you can write down, next you can write down the significance of hydroponics. Significance of hydroponics. Commercially बहुत सारे plants जैसे कि tomato, lettuce, these have been grown using this method. So you can write down commercial production of vegetables such as tomato,
seedless cucumber, then you have lettuce, etc. आप essential elements को identify कर सकते हो along with their role. So you can write down to identify essential elements and their role in structure and function of plants. हम प्लांट का डेफिशिएंसी सिम्टम भी देख सकते हैं कि अगर कोई मिनरल एलिमेंट प्लांट के पास नहीं है तो वो क्या डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाएगा. So you can write down to identify a deficiency symptom of essential elements. जिस एरिया में अगर वहां पे किसी एरिया में सॉइल जो है वो इनफर्टाइल है तो वहां पे आप हाइड्रोपोनिक्स का यूज कर सकते हो. So you can write down useful in areas having thin, infertile and dry soil. कई बार सॉइल का पीएच हाई या लो हो सकता है तो हाइड्रोपोनिक्स में आप इजीली सॉल्यूशन का पीएच भी मेंटेन कर सकते हो. सो यू कैन राइट डाउन इट कैन रेगुलेट द पीएच या द ऑप्टिमम पीएच required for a particular crop. अब जब आप सॉइल का यूज ही नहीं कर रहे हैं, सॉइललेस कल्चर यूज कर रहे हो, तो वहां पर सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, जो पैथोजन सॉइल में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं होगी. अनवांटेड वीड्स जो ग्रो हो जाते हैं वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी. सो यू कैन राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. इट कंट्रोल्स सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, जो पैथोजेंस सॉइल में बॉर्न होते हैं. And it also avoids the problem of weeds. You can write down. It also avoids the problem of weeds. So ये हमने देख लिया कि हाइड्रोपोनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है. अब एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं. Let's study that. Write down the heading. Essential elements. Write down. देखो जितने भी एलिमेंट्स सॉइल में मिलते हैं वो ज्यादातर एलिमेंट्स आराम से रूट से एब्जॉर्ब हो सकते हैं. ठीक है. अब वो जो एलिमेंट्स है उनकी क्वांटिटी सॉइल के अंदर बहुत ही कम होती है. सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट. लिख लो इस बात को. मोस्ट एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स are present in soil and can enter the plant through roots. And can enter the plant through roots.
इनका जो अमाउंट होता है सॉइल के अंदर बहुत ही कम होता है. They are present in very low concentration. Present in soil in very low concentration. That is 10 raised to the power minus 8 gram per ml. ठीक है. Next, मिनरल आयंस में कौन से मिनरल आयंस आपके लिए नहीं, प्लांट के लिए इसेंशियल है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट करे हुए हैं. अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है प्लांट, वो मीट कर रहा है मिनरल एलिमेंट, तो वो मिनरल एलिमेंट प्लांट के लिए इसेंशियल कंसिडर होगा. फॉर एग्जाम्पल, उस मिनरल एलिमेंट का डायरेक्ट रोल होना चाहिए प्लांट के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में. ठीक है. अगर वो मिनरल एलिमेंट प्लांट को नहीं मिला प्रॉपर अमाउंट में, तो प्लांट को डेफिशिएंसी सिम्टम शो करना चाहिए. अगर वो मिनरल एलिमेंट प्लांट को, एक सेकेंड को, तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम शो करना चाहिए. अगर वो मिनरल एलिमेंट प्लांट को नहीं मिलता है, तो कोई और मिनरल एलिमेंट आप सोचो कि इसकी जगह ये दे दे तो काम चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो दैट मिनरल एलिमेंट शुड नॉट बी रिप्लेसेबल बाय एनी अदर मिनरल एलिमेंट. ठीक है. जो काम वो मिनरल एलिमेंट कर रहा है, उसका काम कोई और मिनरल एलिमेंट ना करे. मतलब वो अपना काम, वो अपने काम के लिए बहुत ही एसेंशियल हो. ठीक है. So there are some of the criteria which are proposed to identify that which mineral element is essential for the plant. So write it down. लिख लो इस बात को. Criteria for essentiality. It was proposed by Anand and Stout. Anand and Stout. तो इन्होंने क्या बताया कि वो मिनरल एलिमेंट बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होना चाहिए प्लांट के लिए. So you can write this down. Element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction of plant. Element directly involved होना चाहिए प्लांट के मेटाबॉलिज्म में. Write down. Element must be directly involved in the metabolism of the plant. मैंने बताया था या तो वो प्लांट के स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट का पार्ट होना चाहिए. So you can write down, it should be a component of either structural or functional, either structural or functional molecule. मिनरल एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो किसी और एलिमेंट से रिप्लेस नहीं होनी चाहिए. So you can write it down. Write it down. Requirement of the element must be specific. बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए और वो किसी और से रिप्लेस नहीं होना चाहिए. And not replaceable by another element. Not replaceable by another element. मिनरल एलिमेंट अगर वो रिड्यूस या एब्सेंट होता है, रिड्यूस क्वांटिटी में होता है या एब्सेंट होता है, तो प्लांट को
अगर वो मिनरल एलिमेंट इसेंशियल है तो प्लांट उसके लिए डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं ये, वी आर गोइंग टू यूज देम इन फर्दर क्लासेस, यू कैन राइट इट डाउन। एब्सेंस or reduced availability of element causes deficiency symptom, causes या shows deficiency symptoms। और अगर आप सोचो कि ये डेफिशिएंसी सिम्टम आप करेक्ट करना चाह रहे हो, इसको हटाना चाह रहे हो और कोई और मिनरल एलिमेंट दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप वही मिनरल एलिमेंट दे सकते हो जिसका वो डेफिशिएंसी सिम्टम जिसकी वजह से आ रहा है। सो यू कैन राइट इट डाउन, इट कैन ओनली बी करेक्टेड, कैन ओनली बी करेक्टेड, ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम है कैन ओनली बी करेक्टेड बाय दैट स्पेसिफिक मिनरल एलिमेंट, बाय दैट specific mineral element। इस बेसिस पे मिनरल एलिमेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई करें, दे आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैंगनीज, molybdenum, chlorine, nickel, copper, boron. So these are the essential mineral elements. Out of these, some are required in larger quantity and some are required in lower quantity. तो जो larger quantity में required है, they are macro elements, and जो कम quantity में required है, they are micro elements. So you can write down essential elements can be divided into micronutrients or macronutrients. Macronutrients and micronutrients. You can divide your page into two columns. Divide your page into two columns. First of all, we are going to discuss about macronutrients. So you can write down, ये जो elements होते हैं ये larger amounts में soil में भी present होते हैं और plant के लिए भी required होते हैं. So you can write down, elements are present in large amounts. Large amounts, easily detectable quantity में present होते हैं, और micronutrients on the contrary कम quantity में present होते हैं soil में. You can write down, elements are present in small amounts, in small amounts, स्मॉल अमाउंट्स को हम ट्रेस अमाउंट भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ट्रेस एलिमेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट होती है वो ज्यादा होती है, मोर देन 10 मिलीमोल. यू कैन राइट डाउन पर केजी. concentration of macro element is above 10 millimole per kg of dry matter. 10 millimole per kg of dry matter. और दूसरी साइड पे क्या आएगा, लेस देन, इससे कम होती है. तो concentration of micro element is less than 10 millimole per kg of dry matter.
So you write down concentration of microelement is less than 10 millimole per kg of dry matter. अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ा सा एक्सेस हो जाए तो प्लांट में कोई टॉक्सिसिटी सिम्टम नहीं आता, बट अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ा सा एक्सेस हो जाए तो प्लांट टॉक्सिसिटी सिम्टम शो करता है. सो राइट दिस डाउन. They do not show they do not become toxic in slight excess. A micronutrient, it becomes toxic in slight excess. मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर आप बात करो तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करता है, कॉम्पोनेंटल रोल प्ले करता है. तो यू कैन राइट डाउन दे बिल्ड अप the plant body and different protoplasmic constituents. और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करो तो ये क्या होते हैं, ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं. ज्यादातर ये जो होते हैं फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स में रोल प्ले करते हैं. सो यू कैन राइट डाउन इनका कोई रोल कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने में या प्लांट बॉडी बनाने में नहीं है. तो दे आर जनरली रिक्वायर्ड इन फंक्शनिंग of enzymes. Now macronutrients और micronutrients है कौन कौन से? We are going to discuss about that. So you can write down carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, and sulfur. These are macronutrients. So they are how many in number? They are 9 in number. Iron, zinc, manganese, molybdenum, chlorine, nickel, copper, and boron. So these are 8 in number. So total you have 17 essential elements. अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इनका स्ट्रक्चर में बहुत रोल है. प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बनाने में, यू कैन से न्यूक्लिक एसिड बनाने में, अमाइनो एसिड बनाने में, प्रोटीन बनाने में, तो दे हैव स्ट्रक्चरल रोल. ठीक है. देन मैग्नीशियम की अगर आप बात करते हो तो ये कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. अगर आप बात करते हो फास्फोरस की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी का कंपोनेंट है. कंपोनेंट ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसका कंपोनेंट हो गया एटीपी का, एंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल.
मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटर है, उसको हेल्प करता है क्या कहते हैं रुबिस्को एंजाइम को एंड पेप्टेज एंजाइम को के रोल में उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है. So you can write down it is the activator of magnesium ion is activator of rubisco and peptase enzyme. Rubisco stands for ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase and peptase stands for phosphoenol pyruvate carboxylase. Next, zinc ions act as activator of alcohol dehydrogenase. Molybdenum acts as activator of nitrogenase enzyme. और अगर हम बात करें मैंगनीज की, मैंगनीज, फ्लोरीन, कैल्शियम, ये सारे के सारे का रोल होता है किसमें? फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर कब होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो उसके अंदर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है. ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मिनरल आयंस रिक्वायर्ड होते हैं. सो यू कैन नोट दिस डाउन. नोट कर लो इन सारे डेटा को. नोट दिस डाउन. ये जो मैंने आपको एक्टिवेटर्स बताए हैं, एंजाइम एक्टिवेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव बीन आस्क्ड इन द नीट एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट. So we have done today's portion. We are going to deal with the next topic in the next class, wherein we are going to discuss about the role of these essential elements in detail, deficiency symptoms और toxicity से क्या होता है. अगर ये element थोड़ा सा कम हो प्लांट के अंदर तो प्लांट को क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर ये एलिमेंट थोड़ा ज्यादा हो प्लांट के अंदर, क्वांटिटी में थोड़ा ज्यादा हो जाए प्लांट के अंदर, तो प्लांट क्या सिम्टम्स शो करेगा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल in the next class. Stay tuned, stay safe, bye bye.